Gaudiya Paramahamsa Parivrajagachajastu Tarasatta Sri Sindhira Prabhupada Ananta Koti Vaishnava Vrindaki ISKCON DBT Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Savata Bhakta Vrindaki Transcendental Book Distribution Ki Jai Shri Sri Gauranitai Ki Jai Shri Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai Shri Krishna Balarama Ki Jai Shri Giri Govardhana Ki Jai Shri Sri Radha Ramana Ki Jai Nitai Gaur Assembled devotees, all glorious to the assembled devotees, all glorious to the assembled devotees. All glorious to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glorious to Sri Prabhupada Ki. Om Jnanatirandasya Jananjana Salakaya Tatsaranmiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Nastapitam Jena Bhuttare Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Sha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Tanamami Hari Priye Vansakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevascha Patitanam Padam Namaskritya Dhram Chaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Sri Vyasadeva, the author. Nasta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiti. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyanam Maha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literature of God, Sri Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people, successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Sarabhyai Namaha Om Sarabhyai Namaha Om Sarabhyai Namaha Mukam karoti vacharam pangom langayate girim Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam Hare Krishna. Welcome to Bhagavatam lecture. Continuing to read from Canto number 1, Chapter 2, Text 18. Yesterday, one second. Oh, no, this is 3. Chapter 2. Yes. Chapter 2, entitled Divinity and Divine Service, and today's text is number 18. भागवतम अध्याय स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 18 Nasta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Nasta Prayeshu Bhadreshu Sevaya Uttama Sloke. We do or we don't do the word for word? Huh? Okay. Translation and purport by Divine Grace. By regular attendance in classes on the Bhagavatam, भागवतम के क्लास में रोज नित्य आने से and by rendering of service to the pure devotee, और शुद्ध भक्त की सेवा करने से all that is troublesome to the heart जो भी हृदय में कलमश है is almost completely destroyed, प्रायः वो साफ हो जाता है and loving service unto the personality of Godhead, और भगवान की सेवा में who is praised with transcendental songs, जिनको अच्छे उत्तम श्लोकों से और गुणगान किया जाता है is established as an irrevocable वो fact. हमारे हृदय में एकदम स्थापित हो जाती Purport. है Here is the remedy for eliminating all inauspicious things within the heart, हृदय से सारे अशुभ चीजों को निकालने के लिए दवाई यहाँ बताई गई which are considered to be obstacles in the path of self-realization. जो आत्म साक्षात्कार के रास्ते में रोड़े हैं The remedy is the association of the Bhagavatas, भागवतों के भगवान के भक्तों के साथ संग लेना ही इसका उपाय है
There are two types of दो Bhagavatas, तरह के भागवत होते हैं, namely the book Bhagavata पुस्तक भागवत and the devotee और Bhagavata. भक्त भागवत. Both the Bhagavatas are competent remedies, दोनों भी भागवत जो हैं बहुत ही प्रभावकारी उपाय, and both of them or either of them can be good enough to eliminate the obstacles. दोनों या दोनों में कोई एक भी जो है आदमी को सारे रोड़ों को हटाने के लिए काफी. A devotee Bhagavata is as good as the book Bhagavata एक भक्त भागवत पुस्तक भागवत के बराबर है, because the devotee Bhagavata leads his life in terms of the book Bhagavata. क्योंकि भक्त भागवत पुस्तक भागवत के हिसाब से जीवन जीता है. And the book Bhagavata is full of information about the personality of Godhead और पुस्तक भागवत भगवान के लीलाओं के बारे में भरा हुआ है and his pure और devotees उनके भक्तों के बारे में, who are also वो भी Bhagavatas. भागवत है. Bhagavata book and person are identical. भागवत पुस्तक और भागवत व्यक्ति एकदम सेम है. The devotee Bhagavat is a direct representative of Bhagavan. भक्त भागवत जो है वो भगवान का ही प्रतिनिधि है, The personality of Godhead. So by pleasing the devotee Bhagavata, इसलिए भक्त भागवत को प्रसन्न करके one can receive the benefit of the book Bhagavata. पुस्तक भागवत की कृपा भी उसको प्राप्त कर सकते हैं. Human reason fails to understand how आदमी की बुद्धि फेल हो जाएगी, ये कैसे हुआ, by serving the devotee Bhagavata or the book Bhagavata, one gets gradual promotion on the path of devotion. कि कैसे आदमी का बुद्धि फेल हो जाएगा कि कैसे भगवान की पुस्तक भागवत को सुन के और भक्त भागवत की सेवा करके कैसे आदमी भगवान के पास पहुंच जाएगा, समझ में नहीं आएगा. But actually, these are facts explained by Srila Narada Deva, लेकिन ये सब जो तत्व है नारद मुनि बताए हैं, who happened to be a maidservant's son in his previous life. जो पिछले जन्म में किसी दासी के बेटे थे. The maidservant was engaged in the menial service of the sages. वो दासी जो थी एक आश्रम में संतों की सेवा, छोटी मोटी सेवा करने में लगी थी, And thus he also came into contact with them. इसलिए वो भी, उसका बेटा भी संतों की सेवा में लग गए. And simply by associating with them और ये संतों की सेवा साथ में रहते रहते जो छोटा बच्चा नारद था and by accepting the remnants of foodstuffs और उनका left जो by the प्रसाद sages, का जो बचा हुआ है जो बचता था ये खाता था. prasadam left by the sages, the son of the maidservant got the chance to become the great devotee. और इस तरह से दोनों चीज सुन सुन के और उनका बचा हुआ खा खा के वो एक बड़ा भक्त बने. The great devotee and personality, Sri Narada Deva. बड़े व्यक्ति बन गए, नारद मुनि बन गए बच्चे. These are the miraculous effects of the association of Bhagavatas. भागवत के साथ रहने से ये सब चमत्कारी घटनाएं होती. And thus, and to understand these effects practically, it should be noted that by such sincere association of the Bhagavatas, one is sure to receive transcendental knowledge very easily. भगवान के भागवतों के साथ रह के एकदम पक्का है कि व्यक्ति जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेगा. With the result that he becomes fixed in the devotional service of the Lord. और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया कैसे पता चलेगा, वो भक्ति में स्थित हो जाएगा, हिलेगा नहीं, कोई हिला नहीं सकेगा उस भक्ति से. The more progress is made in devotional service under the guidance of the Bhagavatas, the more one becomes fixed in the transcendental loving service of the Lord. जितना ज़्यादा व्यक्ति भागवत की सेवा में स्थित होता है, उतना ही ज़्यादा उसको भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में आध्यात्मिक उन्नति उसका हो जाता है. The messages of the book Bhagavata, therefore, have to be received from the devotee Bhagavata. इसलिए जो संदेश है भागवत का, जो संदेश है पुस्तक भागवत का, वो व्यक्ति भागवत से सुनना चाहिए. And the combination of these two Bhagavatas will help the neophyte devotee to make progress on and on. इस दोनों चीज का जो जुड़ाव हो जाएगा, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत,
तो भक्त को आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेंगे। Krishna is very kind to arrange this verse, especially today, कृष्ण बहुत कृपालु है कि आज के दिन ये श्लोक हमको मिला, because this verse क्योंकि ये जो श्लोक है is very much uh, extremely, I would say, significant in the context of Srila Prabhupada's leaving America in 1965. आज से कई साल पहले 1965 में प्रभुपाद जी आज ही के दिन अमेरिका गए थे और आज ही के दिन हम प्रवचन कर रहे हैं और ये जो श्लोक है वो इधर आया। What had been prepared and planned for actually centuries. ये कई शताब्दियों से इसका प्लानिंग हो रहा था इसको कि भाई कैसे Our Goswamis in Vrindavan, 500 साल पहले गोस्वामी लोग वृंदावन में थे, under the direction of Lord Chaitanya Mahaprabhu, direct order of Lord Chaitanya महाप्रभु Mahaprabhu, चैतन्य उनको सीधा ऑर्डर दिए थे, were actually, by writing so many literatures, preparing the path for that historical day that took place 51 years ये ago. सब लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे कि एक दिन ये जो भागवत है ये कोई लेके पाश्चात्य जगत को जाएगा। Practically speaking, for the last 500 years, different preparations by different acharyas were being made to actually pave the way for Prabhupada to board the Jaladuta and to go to America 51 years ago. 500 साल से सब आचार्य लोग प्रयास कर रहे थे, कोई तो सब लेके सब तैयारी चल रही थी कि और आखिरी में प्रभुपाद जी सब लेके ज्ञान जलदूत जहाज से चढ़ के अमेरिका गए आज के दिन। Because on that Jaladuta was not only the person Bhagavata, but also the books Bhagavata. जलदूत में केवल व्यक्ति भागवत नहीं थे, पुस्तक भागवत के साथ थे। Srila Prabhupada did not go to America empty-handed. हाँ, खाली हाथ नहीं गए थे प्रभुपाद। Of course, because the devotee Bhagavata, as nicely explained here, is as effective as the book Bhagavata because the devotee Bhagavata carries the book Bhagavata within his heart. तो ये जो भक्त भागवत है, पुस्तक भागवत जितना ही प्रभावशाली है क्योंकि अपने हृदय में ही वो पुस्तक को लेकर घूमता है। So it means that actually on this day we are celebrating Srila Prabhupada's departure for America. Every year actually we हर commemorate. साल हम इस दिन प्रभुपाद के यहाँ से अमेरिका जाने को हम लोग मनाते हैं। And this is especially important this year because within a few days ये आज का इस साल ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद within a few days आज से कुछ ही दिनों में 125वां जन्मदिन प्रभुपाद का आ रहा है। So if Srila Prabhupada had not boarded years ago, 51 साल पहले अगर प्रभुपाद जलदूत में नहीं चढ़े होते, we would not be sitting here this morning. आज यहाँ सुबह हम लोग यहाँ बैठे थे। This we should always remember. हमेशा याद रखना। All that is taking place around the world is the accumulated mercy of all of the acharyas who have followed in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu. जो हमको आज अनुभव हो रहा है, वो सब आचार्यों का जमा कृपा है। इसको Receiving by the mercy of Srila Prabhupada this legacy of continuing to introduce teachings of the Bhagavata as widely as possible all over the world. तो इसलिए हम जो प्राप्त कर रहे हैं प्रभुपाद से, ये पूरे दुनिया में जितना फैला के हो सके उतना प्रचार उसका होना चाहिए। So that is one of the many reasons why it is so essential and important to daily, on a daily basis, be hearing from the Srimad Bhagavatam. इसलिए जरूरी है कि रोज हम भागवतम को सुने। And simultaneously, why it is so important for us to associate on a daily basis with the devotee Bhagavatas. और उसके साथ साथ व्यक्ति भागवत के साथ भी हमको जोड़ना बहुत जरूरी है, रोज के रोज। By this association of the book Bhagavata, by hearing, and by the association of the person Bhagavata, then, as mentioned nicely by Srila Prabhupada,
here, one can make very rapid, very quick spiritual advancement. व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत से यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी, दोनों के जोड़ने से बहुत जल्दी आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है। Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Sravana, Maturabhasa, Srimurtira, Sradhaya Sevana, Sakala Sadhana Shrestha, E Pancha Anga, Krishna Prema Janamaya, E Pancha Alpo Sangha. पांच चीजें बता रहे महाराज जी कि पांच चीज करने से कृष्ण का प्रेम जो है जन्म जाता है। So therefore the Bhagavatam plays a crucial role, is one of those 5 most potent ways by which we can very quickly पांच तरीके जिससे कि बहुत जल्दी है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। very quickly we can awaken, evoke within the heart, actually, because it is already there, the living entity is there within the heart, simply awaiting for this kind of association to awaken to Krishna consciousness. अगर ये पांच चीजें करेंगे तो हमारे अंदर का जो कृष्ण चेतना है वो जाग जाएगा। Yes, that's why sometimes we chant Jeev Jago. इसलिए हम लोग कभी जीव जागो गाते हैं। We should chant it every day, actually. Yeah. So Krishna consciousness is all about Jeev Jago. कृष्ण चेतना जो है सब जीव जागो के बारे में वो रोज रोज इसको जागता है। The more we जीव जागो become, बोलते हैं। yeah, the more we become conscious, then the more we become Krishna conscious. ज्यादा हम जगे रहेंगे तभी तो हम कृष्ण की भावना के बारे में भी जगेंगे। Yes. So we were mentioning yesterday that this was one of the 5 verses that Srila Prabhupada remembered and wrote in his prayer upon arriving in America. ये जो श्लोक हैं 5 श्लोकों की श्रृंखला में हैं जो प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने के समय अपने किताब अपने डायरी में लिखा था। Because this particular chapter, divinity and divine service, divinity means divine service, which means devotional service. दिव्यता का मतलब है दिव्य सेवा का मतलब है भक्तिमय सेवा। Krishna Bhakti, Nitya Siddha. That is the eternal quality. Krishna Bhakti, Nitya Siddha, Sadhya Kabunoi, Sravanadi Sudachite Kara Eudoi. Simply by hearing on a regular basis transcendental sound vibration, it becomes awakened within the heart. केवल सुनने मात्र से दिव्य जो ध्वनि है हमारे हृदय में जाग जाती है। So therefore, Prabhupada, in going to America, he understood even before going. He was preparing himself by going to Vrindavan, as we know. Prabhupada explained, different than sometimes young boys or young men. They think, oh, one day I want to take sannyas. Prabhupada never thought like that. कभी-कभी कोई जवान लड़का सोचता है कि एक दिन हम संन्यास लेंगे। प्रभुपाद कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं सोचा। And Prabhupada used to explain that that was the last thing on my mind to take मेरे लिए sannyas. आखिरी चीज था संन्यास। सोचा ही नहीं था इसके बारे में। And the main reason why Srila Prabhupada did take sannyas was that his Guru Maharaj appeared in a dream on a few occasions to tell him directly, you have to take sannyas. इसलिए कि उनके गुरु बार-बार उनके सपने में आके उनको बोल रहे थे संन्यास लो संन्यास लो। Yes. So, so Srila Prabhupada, when he was in Vrindavan, after leaving family life, he had already, as we know, started to write his Back to Godhead magazine in 1944. He was preparing himself for so many years. जो उन्होंने बैक टू गॉडेड मैगजीन है बहुत साल पहले से ही लिखना चालू कर दिया था। Yes. तो ये अमेरिका जाने की तैयारी कई साल से कर रहे हैं। 30-40 साल से कर रहे हैं। And then by leaving family life, going to Vrindavan, getting these instructions, direct instructions from his spiritual master, he took that solemn decision of taking sannyas, and then he knew taking sannyas means to preach, to travel and preach. संन्यास का मतलब छोड़ के सब खाली प्रचार करना। Yeah. So we are establishing gurukulas to prepare sannyasis. Actually.
गुरुकुल जो हम बना रहे हैं इसमें सन्यासी लोग निकलेंगे। How many want to become sannyasi? सन्यास कितने लोग लेना चाहेंगे? Yes, very good. So we need hundreds. हमको सैकड़ों चाहिए, I'm sorry, we need thousands. हजारों चाहिए। We need thousands of sannyasis traveling all over India and traveling all over the world, पूरे भारत घूमे, पूरे दुनिया घूमे, हजारों हजारों सन्यासी following in the footsteps of our Srila Prabhupada. प्रभुपाद जी के चरण कमलों के अनु पीछे पीछे बढ़ते हुए उसी रास्ते को देखते हुए। Srila Prabhupada has the, what's that expression? He has opened up the, he was the first one to actually, with this kind of mission, he was the first personality to actually succeed. Heading the movement, Yeah, mission, yeah, there's a special word that's not coming, but he was like a, cutting the ice. yeah, something like that. उन्होंने वो बर्फ काट दिया प्रभुपाद जी ने, आगे जाके वो रास्ता निकाल दिया, पीछे से हम लोग समझ जा सकते। Yeah. So it is, and that is why Srila Prabhupada mentioned, Prabhupada knew how momentous a moment it was stepping foot. Finding the path. He found the path. Yeah. In the jungle. Correct. Yeah. There's a word. That, We can create a word. why not? So he was a real what is called pioneer. वो इसके संस्थापक एक वास्तव रूप में थे, जो एक नया रास्ता उन्होंने बनाया कैसे प्रचार करके दुनिया भर हम घूम सकते। Pioneer is translated in different ways. One of the words for pioneer is someone who is a militant. Pioneer जो शब्द अभी बोला, pioneer का एक मतलब है कि वो एक आतंकवादी। Yeah, just like militant. Militant means military. Military. एक जो सेना का जो व्यक्ति है, सेनानी। Yeah, that's why. Yeah, that's why Srila Prabhupada in the Shastra is predicted as being the Mahasenapati. इसे प्रभुपाद को एक शास्त्रों में ऐसा एक prediction है कि वो महासेनापति थे। So Prabhupada's weapon was actually the Bhagavatam. प्रभुपाद का जो हथियार था वो भागवत था। Yes. And therefore, Srila Prabhupada, armed with the Bhagavatam, he was totally confident that by the mercy of Guru and Krishna, he was a little bit like Hanumanji. प्रभुपाद जी थोड़े रूप से हनुमान जी जैसे थे। Hanumanji, leaped from to India, across the ocean and landed. हनुमान जी भारत से लंका कूद गए थे। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही भारत से अमेरिका कूद गए समुद्र के ऊपर। And landed in Sri Lanka facing the enemy. और लंका में जाके दुश्मन को सामना किया। Yeah. So Hanumanji probably he jumped very quickly. Prabhupada, he took a slow boat. प्रभुपाद ने थोड़ा धीरे वाला बोट लिया, पर इतना फास्ट नहीं जाना। But the same concept. He jumped over the ocean and he landed in what we could call the equivalent of Sri Lanka, New York City. लंका के जैसा ही था उस न्यूयॉर्क सिटी जहाँ पहुँचे प्रभुपाद। Because it is at that time, even now. Hanuman ji got two problems, two demons. One demon was correct. This say Simika. Simika was one demon who took him in the heart. And the first one was this Sursa. So Prabhupada also got 2 heart attacks. Yeah, 2 demons. But as Hanuman was successful, Srila Prabhupada also was successful. तो जैसे हनुमान जी कूद के पहुंच गए लंका और 2 असुर थे रास्ते में, सुरसा और सिमिका, वैसे ही प्रभुपाद जी को भी 2 बार हार्ट अटैक आ गया रास्ते में, और ये भी पहुंच गए उधर, ये भी वहाँ पहुंच गए। Yes, and Prabhupada landed in New York, which is actually known as what is it? Hub of material. The sin capital of the world. प्रभुपाद में न्यूयॉर्क गए जिसको कि पाप की राजधानी कहा जाता है दुनिया का।
Yes. पाप की राजधानी। If you want to experience sinful activities, go to New York. But don't go. आपको पाप की राजधानी देखनी है तो आप न्यूयॉर्क जाके देखिए। And you can only go to New York and be protected if you carry the Bhagavatam. वहाँ जाके बचता भी सकते हो जब भागवतम साथ रखोगे। Yes, if you chant, if you carry the holy name. So this was a momentous moment of Prabhupada, and he perfectly understood it. Prabhupada was going to America to actually face Kali face to face. प्रभुपाद अमेरिका गए कली को फेस टू फेस आमना सामना करने के लिए गए। Yes. Did he meet him? Huh? Did he meet him? Did he meet him personally? He met him every day. And he destroyed him every day. मैं पूछा कि महाराज कली को मिले थे क्या प्रभु? Yeah. रोज मिलते थे और रोज उनको बर्बाद करते। They were all coming in his storefront, 22nd Avenue. उनके 26 सेकंड एवेन्यू के स्टोर फ्रंट में रोज आता था। But by coming in contact, by coming in contact with the pure devotee, when one becomes a devotee, it is like declaring war on Maya. जब कोई भक्त बनता है तो माया के ऊपर युद्ध छेड़ने के जैसे। So Srila Prabhupada went to New York City to officially declare war on this misdirected atheistic materialistic civilization. प्रभुपाद जी अमेरिका जाके इन नास्तिकों के अड्डे में उन्होंने ऑफिशियली मतलब ऑफिशियल वार डिक्लेरेशन कर दिया। मतलब आज से युद्ध चालू होता है उसका ऐलान कर दिया। Prabhupada did not go to America like many Indians for other purposes. भारतीय लोग तो अलग-अलग काम करने अमेरिका जाते हैं, प्रभुपाद वैसे अमेरिका नहीं गए। To merge into the Maya of America. अमेरिका के माया में डूबने के लिए जाते हैं लोग। Prabhupada went to America to challenge that Maya. प्रभुपाद वहाँ गए माया को चुनौती देने के लिए। So we should always keep in mind that we are inheriting, we have inherited हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको क्या मिला है ऊपर से। this very rare gift of this Krishna consciousness culture, Vedic culture. वैदिक सभ्यता का जो कृष्ण भक्ति का जो सभ्यता का हमको जो चीज उपहार मिला है, जो हमको विरासत मिला है, उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। And therefore, to show gratitude for what we have received, we should be serious in continuing to hear on a daily basis and to put into practice what we are hearing. जो हमको विरासत में मिला है उसको संभालने के लिए हमको बहुत सीरियस रहना चाहिए और इसके हमको रोज इस भागवत को सुनना चाहिए। हमको रोज प्रैक्टिस में उसको अपने जीवन में रोज लगा के देखना चाहिए। Yes. So any things, कोई प्रश्न है? ठीक है कि पढ़ने का? comments or questions? Maybe before everyone goes out, whoever raised their hands a little while ago, we should take their names down. Whoever raised their hands to become sannyasi, we should take your names down. हाँ, इसने हाथ उठाया सन्यासी है। ये नोट करो। And your fingerprint also. आधार में सबका स्कैन कर लिया है। In case they change mind. And whoever didn't raise their hands, we'll be working on them. जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया था उनके ऊपर हम लोग भिड़ेंगे। In our Gaudiya line, there are many Vaishnavas who are scholarly, yes. Are there examples of like Acharya Vaishnavas who are not so scholarly but by serving ऐसा प्रश्न है कि गौड़ीय वैष्णवों के अंदर बहुत सारे विद्वान आचार्यों का तो नाम आता है, लेकिन ऐसा किसी का नाम है क्या जो कि इतने विद्वान नहीं थे, केवल सेवा करके ही शुद्ध बन गए? ऐसा कोई नाम है? Automatically, anyone who serves the great Bhagavatas, and the example was given this morning in the purport. Narada Muni was born
he was not born in a scholarly family. Right? नारद मुनि जो थे वो कोई बड़े पंडित परिवार में नहीं जन्मे, But by association with the Bhagavatas, he became that great Narada Muni, greatest scholar. Anyone who becomes a devotee automatically becomes a scholar. और इसलिए तो अब जो डिवोटी हो जाता है वो अपने आप ही विद्वान बन ही जाता है, स्कॉलर जो है विदूषक बन ही जाता है। Yeah. I mean, Srila Gaur Das Babaji Maharaj could not even write his name, गौर किशोर दास बाबा जी तो अपने नाम नहीं लिख पाते, but he's one of the greatest scholars. Scholar means actual scholar is one who knows the science of Krishna consciousness. वास्तव में स्कॉलर वो है, पंडित वो है जो ज्ञान जानता है, That's real scholarship, that is real knowledge. वो असली ज्ञान। और Bhakti Siddhanta took initiation from him. Hmm? Bhakti Siddhanta took initiation from him. Yeah, right. He's the biggest scholar on the planet. Actually, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj used to call Bhakti Siddhanta his Prabhu. Because Bhakti Siddhanta, as a young man, as we know, he was like the personal secretary of his father, Bhaktivinoda Thakur, and he was very, very learned. And Gaur Kishore Das Babaji Maharaj used to address him as Prabhu. But Bhakti Siddhanta accepted him as Prabhu and took initiation from him. तो कह रहे कि गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन अपने शिष्य को ही प्रभु बोलते थे। तो क्यों बोलते थे कि उनका जो शिष्य था उनके गुरु का सेक्रेटरी था, और गुरु उनका और इनका शिष्य था बाप बेटे थे। The first time that Bhakti Siddhanta भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे भक्ति सिद्धांत, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर के सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी। actually his name was उनको मिलने जाते थे, बगल में रहते थे, तो उनको प्रभु बोलते थे। Saraswati. सेक्रेटरी को प्रभु नहीं। He had received the title Saraswati actually because he was very learned so as a young man. So when he needed to find a guru, and so Bhaktivinoda Thakur directed him, you take shelter of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. जब भक्ति सिद्धांत बहुत बड़े पंडित थे, सरस्वती उनका उपाधि था, उनको जब गुरु चाहिए था तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि इनसे ले लो। So the first time he approached Gaur Kishore Das Babaji Maharaj and requested him, I'd like to become your disciple, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj just laughed at him. He laughed at him. जब पहली बार गए Get out of here. मुझे आपका शिष्य बना लेंगे, तो वो बहुत हंसा। I can't even write my name and you're a big नाम scholar. नहीं आता, तुमको शिष्य बनाएंगे। So he refused. Many times he refused. बहुत बार उनको भगा दिया। Yeah. And he finally relented or accepted because he बिना इच्छा का आखिरी में उन्होंने ले गया, उन्हें चलो ले लो। yeah. Bhakti Siddhanta was ready to leave his body, to commit suicide. वो If तो he, पानी में कूद के आत्महत्या करने वाले थे, तब उनको दीक्षा दी। I don't know if it's I don't know if you heard this story, but I don't know if it is in the books, but it's basically indicating after trying many times to have Gaur Kishore Das Babaji Maharaj give him initiation, he didn't know what to do. And therefore, one time, there was apparently some kind of small bridge, connecting to sometimes whatever, and so they happened to meet each other. I think in the middle of that bridge, and underneath is like big, river or something, very high. So then I think Bhakti Siddhanta told him that actually if you don't give me initiation, I'm going to jump out of the bridge. एक बार उन लोग एक पुल के ऊपर मिले
और उन्होंने कहा कि आप दीक्षा नहीं दीजिएगा, वो ऊपर पुल था, नीचे नदी था, अब नहीं दिया तो हम यहीं से झाँप दे रहे हैं। So, okay. Don't jump. अरे कूदो मत, देते हैं दीक्षा देते हैं। Anything else? अरे और प्रश्न? First of all, thank you so much for this lecture. So, by the grace of the Supreme Lord Krishna and our Acharyas, Srila Prabhupada, we are getting this transcendental knowledge, and we have just got to know about what is reality actually. What is Reality actually. reality? Yeah. We're getting knowledge about what is reality. Yes. So, as you know that we are part and parcel of the Supreme Lord Krishna, and having said that, we are having to just stay into this materialistic world. So remembering to the Supreme Lord Krishna in every single time is always next to impossible. So how to remember to the Supreme Lord Krishna in every single time? So what should be done for that? We are receiving this knowledge and we come to know that we are part and parcel of Krishna. How to remember that all the time is what you're asking. हम कृष्ण के दास हैं, हमेशा कृष्ण को याद करने का हम कैसे हमेशा कृष्ण को याद कर सकते हैं? Yes, that is a good question because there are two levels of Gyan. One is called Gyan and one is called Vigyan. Simply theoretical knowledge, of course, having knowledge, basic knowledge is good and important, but one must come to that level of Vigyan, of practical application of that knowledge. And so one of the best ways in which we can actually realize that knowledge, always be more conscious of the fact that we are Nitya Krishna Das, is by regularly be hearing Bhagavatam, regularly be chanting the holy name, regularly associating with the devotees. These are the prescribed methods by which we will more easily always remember our position. हमको रोज भागवतम क्लास सुनना होगा, रोज सेवा करना होगा, भक्तों के साथ संग करना होगा। ये तरीके हैं भगवान को हमेशा याद करने। Yeah, those five angas, those five things we mentioned जो है earlier. मथुरावास, धामवास करना, नाम जप करना, भक्तों के साथ रहना। Very, very powerful. They're considered the most powerful बहुत ही शक्तिशाली। activities to actually awaken within the heart. So in the beginning, out of a sense of duty, that is called sadhana bhakti. Out of duty, we are performing all these activities. Gradually, as we perform those activities, from the level of practice, will gradually develop the spontaneous level. धीरे प्रैक्टिस करते करते हमारा है अपने आप ही भगवान का नाम, भगवान का सब याद आना चालू हो जाएगा। From sadhana, as nicely explained by Srila Rupa Goswami, from sadhana bhakti we will come to bhava bhakti, from bhava bhakti we will come to prema bhakti. भावभक्ति में है, भावभक्ति करते करते प्रेम भक्ति में है। Just we have to remain on the path, continue to practice, and gradually it will naturally, gradually unfold. धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से ये जो है खुलता जाएगा। Yeah. ऐसे सब लगे रहेंगे। That's why those who begin at an early stage in Gurukul, they are so fortunate. इसलिए जो पहले गुरुकुल में चालू किए बहुत भाग्यवान है। Yeah. Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Sri Prabhupada ki Gaura Pimanandi. Hare Krishna. Holiness Bhakti Raghavatam